Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for speaking English। और आज का यह जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज आई ऑलरेडी नो यू ऑल आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश सो यू नीड सम ग्रामर नॉलेज। आई वांट टू टेल यू इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश सो ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। That's why today I am here and in this time I am teaching you about modals। मैं modals के बारे में बता रहा हूँ and in modals I completed can, could, may, might and today I am here and today I will teach you means use of must means I already completed should means first of all you will know means what is the meaning of must means must का हिंदी मीनिंग क्या होता है जिससे आपको सेंटेंस बनाने में सुविधा होगा, राइट। मीन्स अवश्य चाहिए। आप मस्ट का प्रयोग किस सेंस में करोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी, जब कोई भी काम आपको अनिवार्य करना हो, आपको वो बहुत ज्यादा जरूरी कि उसे करना ही चाहिए आपको, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करोगे, राइट। कमांड किसी को आदेश देने के लिए मीन्स अगर जब आप किसी को फोर्स करोगे कि आपको ये काम करना ही चाहिए देन यू विल टेल। एंड ऑर्डर, किसी को भी आदेश देने के लिए विथ फुल फोर्स मीन्स पूरा बल दे करके, आप अगर पूरा अपना बल लगा रहे हो तो आप क्या करोगे मीन्स मस्ट का प्रयोग करोगे, राइट। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग एंड एज यू ऑलरेडी नो means a structure, I want to tell you a structure is very important for us speaking English। if you will know a structure then everything will be easy for you। अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा ना, जब आपके माइंड में सारा स्ट्रक्चर सेव हो जाएगा ना तो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा सुविधा होगा, राइट। so I want to tell you how you will remember a structure when you will repeat all the structure every single moment of your time। believe me it will help you a lot if you will repeat one structure more than 10 times that structure will set in your mind। so that's why I want to suggest you must repeat all structure, you need to write it down all things, it will help you a lot, you need to make these notes। so first of all there are 6 type of structure: positive, negative, interrogative, interrogative negative, wh word positive, wh word negative, and today I am here and I written only positive and negative। so what is positive structure? so first of all positive is subject plus must plus v1 plus object। this is a very good thing means while learning models you will use v1। do you know v1 is very easy, everyone can make sentence very easily, so that's very good for you। so subject plus must plus v1 plus object, and in the sense of negative subject plus must plus not plus v1 plus object। negative के लिए सिंपल सीधा not आ जाएगा, राइट। so you will understand through better with the help of sentence। आपको सेंटेंस के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से मीन्स मस्ट का प्रयोग हमें करना चाहिए। so फर्स्ट सेंटेंस मीन्स आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, राइट। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है यू, देन क्या आएगा मस्ट, देन स्पीक इंग्लिश ऑब्जेक्ट, राइट। v1 ऑटोमेटिक यू ऑलरेडी नो। आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का अगर तबीयत खराब है और अगर आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि आपको यह दवा लेना चाहिए, तब आपको क्या करेगा, इट विल हेल्प योर फॉर योर हेल्थ, राइट। सो व्हाट यू विल से, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। this is very important, this all sentence I picked up, this is a means a spoken sentence, so that's why you will write it down this sentence, then you need to tell this type of sentence wherever you will go, and this is very important for speaking English। means if you want to speak in English, so what is the most important thing means whatever you will know you must implement in your life, you must while going anywhere whatever you know you need to speak in English, it will help you a lot, right। so listen here, third means हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, means nothing need to say, if you are healthy then you can live a very healthy life, right, happy life as well as। so we must take exercise every day, means if you will give 1 day rest, 3 day rest, this is not, means every day we need to do exercise, right। and number 4 means हमें वहां अवश्य जाना चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस। मीन्स अगर आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मार्केट जाना, तो कहीं भी आपको जाना है, देन यू विल से मीन्स यार हमें हम वहां क्या है ना कि अवश्य जाना चाहिए, देयर व्हाट यू विल डू, वी मस्ट गो देयर। एंड लास्ट सेंटेंस, this sentence it will help you if you are a student,
मीन्स आपको स्कूल अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो टू स्कूल। आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ मस्ट, आपको मस्ट का प्रयोग करना है। यू अंडरस्टूड अबाउट स्ट्रक्चर एंड व्हेन आई एक्सप्लेन यू अबाउट sentence you understood. And lastly I want to tell you with my heart that I already written all things because I want to tell you with my heart that I don't want to make too long video. If I will make too long video, you will leave this video and you will go. That's why I already written so that I will save your some time and you will be able to understand better, right? And lastly I want to tell you with my heart, means if you want to speak in English, so you must practice every single day, because everything is possible, nothing is possible. Practice is the key to success. Practice makes a man perfect. The more you practice, the more you learn, the more you learn, the more you earn. In this time I am teaching you speaking English. Believe me, if you will follow me, if you will implement my rules and whatever I will tell you, and if you will implement all things, it will help you a lot for speaking English, because I will tell you all things, whatever I learn, जो कुछ भी मैं सिखाऊं, I will teach you. It will help you. And lastly I want to tell you, miss, you don't focus too much on grammar section. आपको grammar section में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, because I want to tell you grammar section is only 15%, but whatever you need for speaking English I will teach you one by one. एक एक चीज करके बताऊंगा, because as you already know, means I completed use of is, am, are, was, were, shall be, will be, have, has, had, means I completed tense, and in this time I am teaching you models. And when I will complete models, then I will teach you about WH word family. WH word, this is important for speaking English. Then I will give you lots of sentence, lots of quotations I will give you, so that it will help you a lot. And if you will implement all things, then it will be help you a lot. And lastly, you already know, means if you will open your mouth, then everything will be easy for you. means अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो you need to open your mouth. आपको अपने मुंह खोलने की जरूरत है. Don't afraid of speaking English. आपको अंग्रेजी बोलने से डरना नहीं, because if you will open your mouth, then initially time you will do mistake, but when you will do mistake, then you will learn, and when you learn, then you will start speaking English fluently, right? Making mistake is not bad, but not learning from mistake is bad. That's why initially time everyone do mistake. I was doing lots of mistake, मैं बहुत ज्यादा गलतियां करता था, but I improved a lot. means while doing mistakes I found that where I am doing mistakes, where I need to improve, it helped me a lot. And lastly I am telling you with my heart that thank you for patiently listening, my all respected friends. मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.